So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered. हाल ही में चल रही खबर जो कि जोमैटो डिलीवरी बॉय के बारे में है। जोमैटो जो कि एक कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है, रेस्टोरेंट से या कहीं से आप कुछ भी फूड मंगा सकते हैं। इसका यहां पर बात है एक लड़की के साथ मारपीट करने की। लड़की का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई जोमैटो डिलीवरी बॉय कामराज द्वारा। उसकी नाक पर मुक्का मारा गया जिससे उसकी नाक पर खून आया और सर्जरी हुई नाक की। लेकिन क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है नजरू, आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज। 10 मार्च को उसने फोन करके कस्टमर केयर से वो ऑर्डर फ्री में करवा लिया, लेकिन कामराज कहता है कि ये ऑर्डर मैं फ्री में नहीं दे सकता। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद लड़के ने लड़की के हाथों को पीछे धकेला। लड़की ने अंगूठी पहन रखी थी और नेल्स थे, तो उनकी वजह से शायद उसके नाक पर चोट लगी। लेकिन लड़की का कहना है कि कामराज ने उसे मुक्का मारा। हितेशा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसके बारे में बताया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। Story, I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic, like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the x-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident, what happened. So they were like, till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like, I being an influencer and face for you guys, if this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me. But I would love if you guys really support and
share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. जोमैटो को जब इस खबर के बारे में पता चला तो जोमैटो ने इस बात पर खेद जताया और कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कामराज को कंपनी से निकाल दिया गया। कामराज को कंपनी से निकाल दिया गया और बेंगलुरु की पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कामराज ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि मैं जब डिलीवरी लेकर पहुंचा तो वो मुझे गाली गलौज कर रही थी, भला बुरा कह रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे हाथापाई की और हाथापाई करने के बाद मुझे चप्पल से मारा और उनकी खुद की ही अंगूठी उनके नाक पर लगी थी। फिर मैंने लिफ्ट से भागने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने सीढ़ियों से वहां से भागे। दीपेंद्र गोयल जो कि जोमैटो कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि कामराज को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी जो भी तनख्वाह है, सैलरी है, उसको नहीं काटा गया है और जांच होने तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और हितेशा चंद्रानी की जो भी मदद है, उनके अस्पताल का खर्चा है, वो सब जोमैटो कंपनी उठा रही है। लेकिन बात इसमें यह है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। इसमें कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं कि लड़की एक्टर है और लड़का विक्टिम है।